ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री सिद्धिलक्ष्मी स्तोत्रं विनियोगः। ओम अस्य श्री सिद्धिलक्ष्मी स्तोत्रस्य हिरण्यगर्भ ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। सिद्धिलक्ष्मीर्देवता मम समस्त दुःख क्लेश पीडा दारिद्र्य विनाशार्थं सर्वलक्ष्मी प्रसन्नकरणार्थं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थं च सिद्धिलक्ष्मी स्तोत्र जपे विनियोगः। ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखां त्रिनेत्रां च त्रिशूलां च पद्मचक्रगदाधरां पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषितां तेजः पुञ्जधरां श्रेष्ठां ध्यायेद् बालकुमारिकाम्। ओंकारलक्ष्मीरूपेण विष्णोर्हृदयमव्ययं विष्णुमानन्दमध्यस्थं ह्रीङ्कारबीजरूपिणीं ॐ क्लीं अमृतानन्दभद्रीं सद्य आनन्ददायिनीं ॐ श्रीं दैत्यभक्षरदां शक्तिमालिनी शत्रुमर्दिनीं तेजः प्रकाशिनी देवी वरदा शुभकारिणी ब्राह्मी च वैष्णवीं भद्रां कालिका रक्तशाम्भवीं आकार ब्रह्मरूपेण ओंकारं विष्णुमव्ययं सिद्धिलक्ष्मी परालक्ष्मी लक्ष्यलक्ष्मी नमोस्तुते। सूर्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभं तन्मध्ये निकरे सूक्ष्मं ब्रह्मरूपं व्यवस्थितं ओंकार परमानन्दं क्रियते सुखसम्पदा सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। प्रथमे त्र्यम्बका गौरी द्वितीये वैष्णवी तथा तृतीये कमला प्रोक्ता चतुर्थे सुरसुन्दरी पंचमे विष्णुपत्नी च षष्ठे च वैष्णवी तथा सप्तमे च वरारोहा अष्टमे वरदायिनी नवमे खड्गत्रिशूला दशमे देवदेवता एकादशे सिद्धिलक्ष्मीर्द्वादशे ललितात्मिका। एतत् स्तोत्रं पठन्तस्त्वां स्तुवन्ति भुवि मानवाः सर्वोपद्रवमुक्तास्ते नात्र कार्या विचारणा। एकमासं द्विमासं वा त्रिमासं च चतुर्मुखं पञ्चमासं च षण्मासं त्रिकालं यः पठेन्नरः ब्राह्मणः क्लेशतो दुःख दरिद्राभयपीडिताः जन्मान्तरसहस्रेषु मुच्यन्ते सर्वक्लेशतः। अलक्ष्मीर्लभते लक्ष्मीं अपुत्रपुत्रमुत्तमं धन्यं यशस्यमायुष्यं वहनि चौरभयेषु च शाकिनी भूतवेताल सर्वव्याधिनिपातके। राजद्वारे महाघोरे संग्रामे रिपुसङ्कटे सभास्थाने श्मशाने च कारागेहारि बन्धने अशेषभयसम्प्राप्तौ सिद्धिलक्ष्मीं जपेन्नरः। ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारणं स्तुवन्ति ब्राह्मणा नित्यं दारिद्र्यं न च वर्धते। या श्रीः पद्मवने कदम्बशिखरे राजगृहे कुञ्जरे श्वेते चाश्वयुते वृषे च युगले यज्ञे च योपस्थिते शङ्खे देवकुले नरेन्द्रभवनी गङ्गातटे गोकुले या श्रीस्तिष्ठतु सर्वदा मम गृहे भूयात् सदा निश्चला। ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखां त्रिनेत्रां च त्रिशूलां च पद्मचक्रगदाधरां पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषितां तेजः पुञ्जधरां श्रेष्ठां ध्यायेद् बालकुमारिकाम्। ओंकारलक्ष्मीरूपेण विष्णोर्हृदयमव्ययं
विष्णुमानन्दमध्यस्थं ह्रीङ्कारबीजरूपिणीं ॐ क्लीं अमृतानन्दभद्रीं सद्य आनन्ददायिनीं ॐ श्रीं दैत्यभक्षरदां शक्तिमालिनी शत्रुमर्दिनीं तेजः प्रकाशिनी देवी वरदा शुभकारिणी ब्राह्मी च वैष्णवीं भद्रां कालिका रक्तशाम्भवीं आकार ब्रह्मरूपेण ओंकारं विष्णुमव्ययं सिद्धिलक्ष्मी परालक्ष्मी लक्ष्यलक्ष्मी नमोस्तुते सूर्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभं तन्मध्ये निकरे सूक्ष्मं ब्रह्मरूपं व्यवस्थितम् ओंकार परमानन्दं क्रियते सुखसम्पदा सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके प्रथमे त्र्यम्बका गौरी द्वितीये वैष्णवी तथा तृतीये कमला प्रोक्ता चतुर्थे सुरसुन्दरी पंचमे विष्णुपत्नी च षष्ठे च वैष्णवी तथा सप्तमे च वरारोहा अष्टमे वरदायिनी नवमे खड्गत्रिशूला दशमे देवदेवता एकादशे सिद्धिलक्ष्मीर्द्वादशे ललितात्मिका एतत् स्तोत्रं पठन्तस्त्वां स्तुवन्ति भुवि मानवाः सर्वोपद्रवमुक्तास्ते नात्र कार्या विचारणा एकमासं द्विमासं वा त्रिमासं च चतुर्मुखं पंचमासं च षण्मासं त्रिकालं यः पठेन्नरः ब्राह्मणः क्लेशतो दुःख दरिद्राभयपीडिताः जन्मान्तरसहस्रेषु मुच्यन्ते सर्वक्लेशतः अलक्ष्मीर्लभते लक्ष्मीम् अपुत्रपुत्रमुत्तमं धन्यं यशस्यमायुष्यं वहनि चौरभयेषु च शाकिनी भूतवेताल सर्वव्याधिनिपातके राजद्वारे महाघोरे संग्रामे रिपुसङ्कटे सभास्थाने श्मशाने च कारागेहारिबन्धने अशेषभयसम्प्राप्तौ सिद्धिलक्ष्मीं जपेन्नरः ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारणं स्तुवन्ति ब्राह्मणा नित्यं दारिद्र्यं न च वर्धते या श्रीः पद्मवने कदम्बशिखरे राजगृहे कुञ्जरे श्वेते चाश्वयुते वृषे च युगले यज्ञे च योपस्थिते शंखे देवकुले नरेन्द्रभवनी गंगातटे गोकुले या श्रीस्तिष्ठतु सर्वदा मम गृहे भूयात् सदा निश्चला ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखां त्रिनेत्रां च त्रिशूलां च पद्मचक्रगदाधरां पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषितां तेजः पुञ्जधरां श्रेष्ठां ध्यायेद् बालकुमारिकाम् ओंकारलक्ष्मीरूपेण विष्णोर्हृदयमव्ययं विष्णुमानन्दमध्यस्थं ह्रीङ्कारबीजरूपिणीं ॐ क्लीं अमृतानन्दभद्रीं सद्य आनन्ददायिनीं ॐ श्रीं दैत्यभक्षरदां शक्तिमालिनी शत्रुमर्दिनीं तेजः प्रकाशिनी देवी वरदा शुभकारिणी ब्राह्मी च वैष्णवीं भद्रां कालिका रक्तशाम्भवीं आकार ब्रह्मरूपेण ओंकारं विष्णुमव्ययं सिद्धिलक्ष्मी परालक्ष्मी लक्ष्यलक्ष्मी नमोस्तुते सूर्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभं तन्मध्ये निकरे सूक्ष्मं ब्रह्मरूपं व्यवस्थितम् ओंकार परमानन्दं क्रियते सुखसम्पदा सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके प्रथमे त्र्यम्बका गौरी द्वितीये वैष्णवी तथा तृतीये कमला प्रोक्ता
चतुर्थे सुरसुन्दरी पंचमे विष्णुपत्नी च षष्ठे च वैष्णवी तथा सप्तमे च वरारोहा अष्टमे वरदायिनी नवमे खड्गत्रिशूला दशमे देवदेवता एकादशे सिद्धिलक्ष्मीर्द्वादशे ललितात्मिका एतत् स्तोत्रं पठन्तस्त्वां स्तुवन्ति भुवि मानवाः सर्वोपद्रवमुक्तास्ते नात्र कार्या विचारणा एकमासं द्विमासं वा त्रिमासं च चतुर्मुखं पंचमासं च षण्मासं त्रिकालं यः पठेन्नरः ब्राह्मणः क्लेशतो दुःख दरिद्राभयपीडिताः जन्मान्तरसहस्रेषु मुच्यन्ते सर्वक्लेशतः अलक्ष्मीर्लभते लक्ष्मीम् अपुत्रपुत्रमुत्तमं धन्यं यशस्यमायुष्यं वहनि चौरभयेषु च शाकिनीभूतवेताल सर्वव्याधिनिपातके राजद्वारे महाघोरे संग्रामे रिपुसङ्कटे सभास्थाने श्मशाने च कारागेहारिबन्धने अशेषभयसम्प्राप्तौ सिद्धिलक्ष्मीं जपेन्नरः ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारणं स्तुवन्ति ब्राह्मणा नित्यं दारिद्र्यं न च वर्धते या श्रीः पद्मवने कदम्बशिखरे राजगृहे कुञ्जरे श्वेते चाश्वयुते वृषे च युगले यज्ञे च योपस्थिते शंखे देवकुले नरेन्द्रभवनी गंगातटे गोकुले या श्रीस्तिष्ठतु सर्वदा मम गृहे भूयात् सदा निश्चला ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखां त्रिनेत्रां च त्रिशूलां च पद्मचक्रगदाधरां पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषितां तेजः पुञ्जधरां श्रेष्ठां ध्यायेद् बालकुमारिकाम् ओंकारलक्ष्मीरूपेण विष्णोर्हृदयमव्ययं विष्णुमानन्दमध्यस्थं ह्रीङ्कारबीजरूपिणीं ॐ क्लीं अमृतानन्दभद्रीं सद्य आनन्ददायिनीं ॐ श्रीं दैत्यभक्षरदां शक्तिमालिनी शत्रुमर्दिनी तेजः प्रकाशिनी देवी वरदा शुभकारिणी ब्राह्मी च वैष्णवीं भद्रां कालिका रक्तशाम्भवीं आकार ब्रह्मरूपेण ओंकारं विष्णुमव्ययं सिद्धिलक्ष्मी परालक्ष्मी लक्ष्यलक्ष्मी नमोस्तुते सूर्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभं तन्मध्ये निकरे सूक्ष्मं ब्रह्मरूपं व्यवस्थितम् ओंकार परमानन्दं क्रियते सुखसम्पदा सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके प्रथमे त्र्यम्बका गौरी द्वितीये वैष्णवी तथा तृतीये कमला प्रोक्ता चतुर्थे सुरसुन्दरी पंचमे विष्णुपत्नी च षष्ठे च वैष्णवी तथा सप्तमे च वरारोहा अष्टमे वरदायिनी नवमे खड्गत्रिशूला दशमे देवदेवता एकादशे सिद्धिलक्ष्मीर्द्वादशे ललितात्मिका एतत् स्तोत्रं पठन्तस्त्वां स्तुवन्ति भुवि मानवाः सर्वोपद्रवमुक्तास्ते नात्र कार्या विचारणा एकमासं द्विमासं वा त्रिमासं च चतुर्मुखं पंचमासं च षण्मासं त्रिकालं यः पठेन्नरः ब्राह्मणः क्लेशतो दुःख दरिद्राभयपीडिताः जन्मान्तरसहस्रेषु मुच्यन्ते सर्वक्लेशतः अलक्ष्मीर्लभते लक्ष्मीम् अपुत्रपुत्रमुत्तमं धन्यं यशस्यमायुष्यं वहनि चौरभयेषु च शाकिनीभूतवेताल
सर्वव्याधिनिपातके राजद्वारे महाघोरे संग्रामे रिपुसंकटे सभास्थाने श्मशाने च कारागे हारिबन्धने अशेष भय संप्राप्तौ सिद्धिलक्ष्मीं जपेन्नरः ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारणं स्तुवन्ति ब्राह्मणा नित्यं दारिद्र्यं न च वर्धते या श्रीः पद्मवने कदम्बशिखरे राजगृहे कुञ्जरे श्वेते चाश्वयुते वृषे च युगले यज्ञे च योपस्थिते शङ्खे देवकुले नरेन्द्रभवनी गङ्गातटे गोकुले या श्रीस्तिष्ठतु सर्वदा मम गृहे भूयात् सदा निश्चला ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखां त्रिनेत्रां च त्रिशूलां च पद्मचक्रगदाधरां पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषितां तेजः पुञ्जधरां श्रेष्ठां ध्यायेद् बालकुमारिकाम् ओंकारलक्ष्मीरूपेण विष्णोर्हृदयमव्ययं विष्णुमानन्दमध्यस्थं ह्रीङ्कारबीजरूपिणीं ॐ क्लीं अमृतानन्दभद्रीं सद्य आनन्ददायिनीं ॐ श्रीं दैत्यभक्षरदां शक्तिमालिनी शत्रुमर्दिनी तेजः प्रकाशिनी देवी वरदा शुभकारिणी ब्राह्मी च वैष्णवीं भद्रां कालिका रक्तशाम्भवीं आकार ब्रह्मरूपेण ओंकारं विष्णुमव्ययं सिद्धिलक्ष्मी परालक्ष्मी लक्ष्यलक्ष्मी नमोऽस्तुते सूर्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभं तन्मध्ये निकरे सूक्ष्मं ब्रह्मरूपं व्यवस्थितम् ओंकार परमानन्दं क्रियते सुखसंपदा सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके प्रथमे त्र्यम्बका गौरी द्वितीये वैष्णवी तथा तृतीये कमला प्रोक्ता चतुर्थे सुरसुन्दरी पंचमे विष्णुपत्नी च षष्ठे च वैष्णवी तथा सप्तमे च वरारोहा अष्टमे वरदायिनी नवमे खड्गत्रिशूला दशमे देवदेवता एकादशे सिद्धिलक्ष्मीर्द्वादशे ललितात्मिका एतत् स्तोत्रं पठन्तस्त्वां स्तुवन्ति भुवि मानवाः सर्वोपद्रवमुक्तास्ते नात्र कार्या विचारणा एकमासं द्विमासं वा त्रिमासं च चतुर्मुखं पंचमासं च षण्मासं त्रिकालं यः पठेन्नरः ब्राह्मणः क्लेशतो दुःख दरिद्राभयपीडिताः जन्मान्तरसहस्रेषु मुच्यन्ते सर्वक्लेशतः अलक्ष्मीर्लभते लक्ष्मीम् अपुत्रपुत्रमुत्तमं धन्यं यशस्यमायुष्यं वहनि चौरभयेषु च शाकिनीभूतवेताल सर्वव्याधिनिपातके राजद्वारे महाघोरे संग्रामे रिपुसंकटे सभास्थाने श्मशाने च कारागे हारिबन्धने अशेष भय संप्राप्तौ सिद्धिलक्ष्मीं जपेन्नरः ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारणं स्तुवन्ति ब्राह्मणा नित्यं दारिद्र्यं न च वर्धते या श्रीः पद्मवने कदम्बशिखरे राजगृहे कुञ्जरे श्वेते चाश्वयुते वृषे च युगले यज्ञे च योपस्थिते शङ्खे देवकुले नरेन्द्रभवनी गङ्गातटे गोकुले या श्रीस्तिष्ठतु सर्वदा मम गृहे भूयात् सदा निश्चला ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखां त्रिनेत्रां च त्रिशूलां च पद्मचक्रगदाधरां
पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषितां तेजः पुञ्जधरां श्रेष्ठां ध्यायेद् बालकुमारिकाम् ओंकारलक्ष्मीरूपेण विष्णोर्हृदयमव्ययं विष्णुमानन्दमध्यस्थं ह्रीङ्कारबीजरूपिणीं ॐ क्लीं अमृतानन्दभद्रीं सद्य आनन्ददायिनीं ॐ श्रीं दैत्यभक्षरदां शक्तिमालिनी शत्रुमर्दिनीं तेजः प्रकाशिनी देवी वरदा शुभकारिणी ब्राह्मी च वैष्णवीं भद्रां कालिका रक्तशाम्भवीं आकार ब्रह्मरूपेण ओंकारं विष्णुमव्ययं सिद्धिलक्ष्मी परालक्ष्मी लक्ष्यलक्ष्मी नमोऽस्तु ते सूर्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभं तन्मध्ये निकरे सूक्ष्मं ब्रह्मरूपं व्यवस्थितं ओंकार परमानन्दं क्रियते सुखसम्पदा सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके प्रथमे त्र्यम्बका गौरी द्वितीये वैष्णवी तथा तृतीये कमला प्रोक्ता चतुर्थे सुरसुन्दरी पंचमे विष्णुपत्नी च षष्ठे च वैष्णवी तथा सप्तमे च वरारोहा अष्टमे वरदायिनी नवमे खड्गत्रिशूला दशमे देवदेवता एकादशे सिद्धिलक्ष्मीर्द्वादशे ललितात्मिका एतत् स्तोत्रं पठन्तस्त्वां स्तुवन्ति भुवि मानवाः सर्वोपद्रवमुक्तास्ते नात्र कार्या विचारणा एकमासं द्विमासं वा त्रिमासं च चतुर्मुखं पंचमासं च षण्मासं त्रिकालं यः पठेन्नरः ब्राह्मणः क्लेशतो दुःख दरिद्राभयपीडिताः जन्मान्तरसहस्रेषु मुच्यन्ते सर्वक्लेशतः अलक्ष्मीर्लभते लक्ष्मीम् अपुत्रपुत्रमुत्तमं धन्यं यशस्यमायुष्यं वहनि चौरभयेषु च शाकिनीभूतवेताल सर्वव्याधिनिपातके राजद्वारे महाघोरे संग्रामे रिपुसङ्कटे सभास्थाने श्मशाने च कारागेहारिबन्धने अशेषभयसम्प्राप्तौ सिद्धिलक्ष्मीं जपेन्नरः ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारणं स्तुवन्ति ब्राह्मणा नित्यं दारिद्र्यं न च वर्धते या श्रीः पद्मवने कदम्बशिखरे राजगृहे कुञ्जरे श्वेते चाश्वयुते वृषे च युगले यज्ञे च योपस्थिते शङ्खे देवकुले नरेन्द्रभवनी गङ्गातटे गोकुले या श्रीस्तिष्ठतु सर्वदा मम गृहे भूयात् सदा निश्चला ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखां त्रिनेत्रां च त्रिशूलां च पद्मचक्रगदाधरां पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषितां तेजः पुञ्जधरां श्रेष्ठां ध्यायेद् बालकुमारिकाम् ओंकारलक्ष्मीरूपेण विष्णोर्हृदयमव्ययं विष्णुमानन्दमध्यस्थं ह्रीङ्कारबीजरूपिणीं ॐ क्लीं अमृतानन्दभद्रीं सद्य आनन्ददायिनीं ॐ श्रीं दैत्यभक्षरदां शक्तिमालिनी शत्रुमर्दिनीं तेजः प्रकाशिनी देवी वरदा शुभकारिणी ब्राह्मी च वैष्णवीं भद्रां कालिका रक्तशाम्भवीं आकार ब्रह्मरूपेण ओंकारं विष्णुमव्ययं सिद्धिलक्ष्मी परालक्ष्मी लक्ष्यलक्ष्मी नमोऽस्तु ते सूर्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभं तन्मध्ये निकरे सूक्ष्मं ब्रह्मरूपं व्यवस्थितं
ओंकार परमानंद क्रियते सुख संपदा सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके प्रथमे त्र्यंबका गौरी द्वितीये वैष्णवी तथा तृतीये कमला प्रोक्ता चतुर्थे सुरसुंदरी पंचमे विष्णुपत्नी च षष्ठे च वैष्णवी तथा सप्तमे च वरारोहा अष्टमे वरदायिनी नवमे खड्गत्रिशूला दशमे देवदेवता एकादशे सिद्धिलक्ष्मीर्द्वादशे ललितात्मिका एतत् स्तोत्रं पठन्तस्त्वां स्तुवन्ति भुवि मानवाः सर्वोपद्रवमुक्तास्ते नात्र कार्या विचारणा एकमासं द्विमासं वा त्रिमासं च चतुर्मुखं पंचमासं च षण्मासं त्रिकालं यः पठेन्नरः ब्राह्मणः क्लेशतो दुःख दरिद्राभयपीडिताः जन्मान्तरसहस्रेषु मुच्यन्ते सर्वक्लेशतः अलक्ष्मीर्लभते लक्ष्मीम् अपुत्र पुत्रमुत्तमं धन्यं यशस्यमायुष्यं वहनि चौरभयेषु च शाकिनी भूतवेताल सर्वव्याधिनिपातके राजद्वारे महाघोरे संग्रामे रिपुसंकटे सभास्थाने श्मशाने च कारागेहारिबन्धने अशेषभयसम्प्राप्तौ सिद्धिलक्ष्मीं जपेन्नरः ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारणं स्तुवन्ति ब्राह्मणा नित्यं दारिद्र्यं न च वर्धते या श्रीः पद्मवने कदम्बशिखरे राजगृहे कुञ्जरे श्वेते चाश्वयुते वृषे च युगले यज्ञे च योपस्थिते शंखे देवकुले नरेन्द्रभवनी गंगातटे गोकुले या श्रीस्तिष्ठतु सर्वदा मम गृहे भूयात् सदा निश्चला ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखां त्रिनेत्रां च त्रिशूलां च पद्मचक्रगदाधरां पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषितां तेजः पुञ्जधरां श्रेष्ठां ध्यायेद् बालकुमारिकाम् ओंकारलक्ष्मीरूपेण विष्णोर्हृदयमव्ययं विष्णुमानन्दमध्यस्थं ह्रीङ्कारबीजरूपिणीं ॐ क्लीं अमृतानन्दभद्रीं सद्य आनन्ददायिनीं ॐ श्रीं दैत्यभक्षरदां शक्तिमालिनी शत्रुमर्दिनी तेजः प्रकाशिनी देवी वरदा शुभकारिणी ब्राह्मी च वैष्णवीं भद्रां कालिका रक्तशाम्भवीं आकार ब्रह्मरूपेण ओंकारं विष्णुमव्ययं सिद्धिलक्ष्मी परालक्ष्मी लक्ष्यलक्ष्मी नमोस्तुते सूर्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभं तन्मध्ये निकरे सूक्ष्मं ब्रह्मरूपं व्यवस्थितम् ओंकार परमानंदं क्रियते सुख संपदा सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके प्रथमे त्र्यंबका गौरी द्वितीये वैष्णवी तथा तृतीये कमला प्रोक्ता चतुर्थे सुरसुंदरी पंचमे विष्णुपत्नी च षष्ठे च वैष्णवी तथा सप्तमे च वरारोहा अष्टमे वरदायिनी नवमे खड्गत्रिशूला दशमे देवदेवता एकादशे सिद्धिलक्ष्मीर्द्वादशे ललितात्मिका एतत् स्तोत्रं पठन्तस्त्वां स्तुवन्ति भुवि मानवाः सर्वोपद्रवमुक्तास्ते नात्र कार्या विचारणा एकमासं द्विमासं वा त्रिमासं च चतुर्मुखं पंचमासं च षण्मासं त्रिकालं यः पठेन्नरः ब्राह्मणः क्लेशतो दुःख दरिद्राभयपीडिताः
जन्मान्तरसहस्रेषु मुच्यन्ते सर्वक्लेशतः अलक्ष्मीर्लभते लक्ष्मीम् अपुत्रपुत्रमुत्तमं धन्यं यशस्य मायुष्यं वहनि चौरभयेषु च शाकिनीभूतवेताल सर्वव्याधिनिपातके राजद्वारे महाघोरे संग्रामे रिपुसंकटे सभास्थाने श्मशाने च कारागे हारिबन्धने अशेष भय संप्राप्तौ सिद्धिलक्ष्मीं जपे नरः ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारणं स्तुवन्ति ब्राह्मणा नित्यं दारिद्र्यं न च वर्धते या श्रीः पद्मवने कदम्बशिखरे राजगृहे कुञ्जरे श्वेते चाश्वयुते वृषे च युगले यज्ञे च योपस्थिते शंखे देवकुले नरेन्द्रभवनी गंगातटे गोकुले या श्रीस्तिष्ठतु सर्वदा मम गृहे भूयात् सदा निश्चला ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखां त्रिनेत्रां च त्रिशूलां च पद्मचक्रगदाधरां पीताम्बरधरां देवीं नानालंकारभूषितां तेजः पुञ्जधरां श्रेष्ठां ध्यायेद् बालकुमारिकाम् ओंकारलक्ष्मीरूपेण विष्णोर्हृदयमव्ययं विष्णुमानन्दमध्यस्थं ह्रीङ्कारबीजरूपिणीं ॐ क्लीं अमृतानन्दभद्रीं सद्य आनन्ददायिनीं ॐ श्रीं दैत्यभक्षरदां शक्तिमालिनी शत्रुमर्दिनी तेजः प्रकाशिनी देवी वरदा शुभकारिणी ब्राह्मी च वैष्णवीं भद्रां कालिका रक्तशाम्भवीं आकार ब्रह्मरूपेण ओंकारं विष्णुमव्ययं सिद्धिलक्ष्मी परालक्ष्मी लक्ष्यलक्ष्मी नमोस्तुते सूर्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभं तन्मध्ये निकरे सूक्ष्मं ब्रह्मरूपं व्यवस्थितम् ओंकार परमानन्दं क्रियते सुखसंपदा सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके प्रथमे त्र्यम्बका गौरी द्वितीये वैष्णवी तथा तृतीये कमला प्रोक्ता चतुर्थे सुरसुन्दरी पंचमे विष्णुपत्नी च षष्ठे च वैष्णवी तथा सप्तमे च वरारोहा अष्टमे वरदायिनी नवमे खड्गत्रिशूला दशमे देवदेवता एकादशे सिद्धिलक्ष्मीर्द्वादशे ललितात्मिका एतत् स्तोत्रं पठन्तस्त्वां स्तुवन्ति भुवि मानवाः सर्वोपद्रवमुक्तास्ते नात्र कार्या विचारणा एकमासं द्विमासं वा त्रिमासं च चतुर्मुखं पंचमासं च षण्मासं त्रिकालं यः पठेन्नरः ब्राह्मणः क्लेशतो दुःख दरिद्राभयपीडिताः जन्मान्तरसहस्रेषु मुच्यन्ते सर्वक्लेशतः अलक्ष्मीर्लभते लक्ष्मीम् अपुत्रपुत्रमुत्तमं धन्यं यशस्य मायुष्यं वहनि चौरभयेषु च शाकिनीभूतवेताल सर्वव्याधिनिपातके राजद्वारे महाघोरे संग्रामे रिपुसंकटे सभास्थाने श्मशाने च कारागे हारिबन्धने अशेष भय संप्राप्तौ सिद्धिलक्ष्मीं जपे नरः ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारणं स्तुवन्ति ब्राह्मणा नित्यं दारिद्र्यं न च वर्धते या श्रीः पद्मवने कदम्बशिखरे राजगृहे कुञ्जरे श्वेते चाश्वयुते वृषे च युगले यज्ञे च योपस्थिते शंखे देवकुले नरेन्द्रभवनी गंगातटे गोकुले
या श्रीस्तिष्ठतु सर्वदा मम गृहे भूयात् सदा निश्चला। ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखां त्रिनेत्रां च त्रिशूलां च पद्मचक्रगदाधरां पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषितां तेजः पुञ्जधरां श्रेष्ठां ध्यायेद् बालकुमारिकाम्। ओंकारलक्ष्मीरूपेण विष्णोर्हृदयमव्ययं विष्णुमानन्दमध्यस्थं ह्रीङ्कारबीजरूपिणीं ॐ क्लीं अमृतानन्दभद्रीं सद्य आनन्ददायिनीं ॐ श्रीं दैत्यभक्षरदां शक्तिमालिनी शत्रुमर्दिनीं तेजः प्रकाशिनी देवी वरदा शुभकारिणी ब्राह्मी च वैष्णवीं भद्रां कालिका रक्तशाम्भवीं आकार ब्रह्मरूपेण ओंकारं विष्णुमव्ययं सिद्धिलक्ष्मी परालक्ष्मी लक्ष्यलक्ष्मी नमोस्तुते। सूर्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभं तन्मध्ये निकरे सूक्ष्मं ब्रह्मरूपं व्यवस्थितम् ओंकार परमानन्दं क्रियते सुखसम्पदा सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। प्रथमे त्र्यम्बका गौरी द्वितीये वैष्णवी तथा तृतीये कमला प्रोक्ता चतुर्थे सुरसुन्दरी पंचमे विष्णुपत्नी च षष्ठे च वैष्णवी तथा सप्तमे च वरारोहा अष्टमे वरदायिनी नवमे खड्गत्रिशूला दशमे देवदेवता एकादशे सिद्धिलक्ष्मीर्द्वादशे ललितात्मिका। एतत् स्तोत्रं पठन्तस्त्वां स्तुवन्ति भुवि मानवाः सर्वोपद्रवमुक्तास्ते नात्र कार्या विचारणा। एकमासं द्विमासं वा त्रिमासं च चतुर्मुखं पंचमासं च षण्मासं त्रिकालं यः पठेन्नरः ब्राह्मणः क्लेशतो दुःख दरिद्राभयपीडिताः जन्मान्तरसहस्रेषु मुच्यन्ते सर्वक्लेशतः। अलक्ष्मीर्लभते लक्ष्मीम् अपुत्रपुत्रमुत्तमं धन्यं यशस्यमायुष्यं वहनि चौरभयेषु च। शाकिनीभूतवेताल सर्वव्याधिनिपातके राजद्वारे महाघोरे संग्रामे रिपुसंकटे सभास्थाने श्मशाने च कारागेहारिबन्धने अशेषभयसम्प्राप्तौ सिद्धिलक्ष्मीं जपेन्नरः। ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारणं स्तुवन्ति ब्राह्मणा नित्यं दारिद्र्यं न च वर्धते। या श्रीः पद्मवने कदम्बशिखरे राजगृहे कुञ्जरे श्वेते चाश्वयुते वृषे च युगले यज्ञे च योपस्थिते शङ्खे देवकुले नरेन्द्रभवनी गङ्गातटे गोकुले। या श्रीस्तिष्ठतु सर्वदा मम गृहे भूयात् सदा निश्चला। ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखां त्रिनेत्रां च त्रिशूलां च पद्मचक्रगदाधरां पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषितां तेजः पुञ्जधरां श्रेष्ठां ध्यायेद् बालकुमारिकाम्। ओंकारलक्ष्मीरूपेण विष्णोर्हृदयमव्ययं विष्णुमानन्दमध्यस्थं ह्रीङ्कारबीजरूपिणीं ॐ क्लीं अमृतानन्दभद्रीं सद्य आनन्ददायिनीं ॐ श्रीं दैत्यभक्षरदां शक्तिमालिनी शत्रुमर्दिनीं तेजः प्रकाशिनी देवी वरदा शुभकारिणी ब्राह्मी च वैष्णवीं भद्रां कालिका रक्तशाम्भवीं आकार ब्रह्मरूपेण
ओंकारं विष्णुमव्ययं सिद्धिलक्ष्मी परालक्ष्मी लक्ष्यलक्ष्मी नमोऽस्तु ते। सूर्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभं तन्मध्ये निकरे सूक्ष्मं ब्रह्मरूपं व्यवस्थितम्। ओंकार परमानन्दं क्रियते सुखसम्पदा सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। प्रथमे त्र्यम्बका गौरी द्वितीये वैष्णवी तथा तृतीये कमला प्रोक्ता चतुर्थे सुरसुन्दरी पंचमे विष्णुपत्नी च षष्ठे च वैष्णवी तथा सप्तमे च वरारोहा अष्टमे वरदायिनी नवमे खड्गत्रिशूला दशमे देवदेवता एकादशे सिद्धिलक्ष्मीर्द्वादशे ललितात्मिका। एतत् स्तोत्रं पठन्तस्त्वां स्तुवन्ति भुवि मानवाः सर्वोपद्रवमुक्तास्ते नात्र कार्या विचारणा। एकमासं द्विमासं वा त्रिमासं च चतुर्मुखं पंचमासं च षण्मासं त्रिकालं यः पठेन्नरः ब्राह्मणः क्लेशतो दुःख दरिद्राभयपीडिताः जन्मान्तरसहस्रेषु मुच्यन्ते सर्वक्लेशतः। अलक्ष्मीर्लभते लक्ष्मीम् अपुत्रपुत्रमुत्तमं धन्यं यशस्यमायुष्यं वहनि चौरभयेषु च। शाकिनीभूतवेताल सर्वव्याधिनिपातके राजद्वारे महाघोरे संग्रामे रिपुसङ्कटे सभास्थाने श्मशाने च कारागे हारिबन्धने अशेषभयसम्प्राप्तौ सिद्धिलक्ष्मीं जपेन्नरः। ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारणं स्तुवन्ति ब्राह्मणा नित्यं दारिद्र्यं न च वर्धते। या श्रीः पद्मवने कदम्बशिखरे राजगृहे कुञ्जरे श्वेते चाश्वयुते वृषे च युगले यज्ञे च योपस्थिते शङ्खे देवकुले नरेन्द्रभवनी गङ्गातटे गोकुले। या श्रीस्तिष्ठतु सर्वदा मम गृहे भूयात् सदा निश्चला। ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखां त्रिनेत्रां च त्रिशूलां च पद्मचक्रगदाधरां पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषितां तेजः पुञ्जधरां श्रेष्ठां ध्यायेद् बालकुमारिकाम्। ओंकारलक्ष्मीरूपेण विष्णोर्हृदयमव्ययं विष्णुमानन्दमध्यस्थं ह्रीङ्कारबीजरूपिणीं ॐ क्लीं अमृतानन्दभद्रीं सद्य आनन्ददायिनीं ॐ श्रीं दैत्यभक्षरदां शक्तिमालिनी शत्रुमर्दिनीं तेजः प्रकाशिनी देवी वरदा शुभकारिणी ब्राह्मी च वैष्णवीं भद्रां कालिका रक्तशाम्भवीं। आकार ब्रह्मरूपेण ओंकारं विष्णुमव्ययं सिद्धिलक्ष्मी परालक्ष्मी लक्ष्यलक्ष्मी नमोऽस्तु ते। सूर्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभं तन्मध्ये निकरे सूक्ष्मं ब्रह्मरूपं व्यवस्थितम्। ओंकार परमानन्दं क्रियते सुखसम्पदा सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। प्रथमे त्र्यम्बका गौरी द्वितीये वैष्णवी तथा तृतीये कमला प्रोक्ता चतुर्थे सुरसुन्दरी पंचमे विष्णुपत्नी च षष्ठे च वैष्णवी तथा सप्तमे च वरारोहा अष्टमे वरदायिनी नवमे खड्गत्रिशूला दशमे देवदेवता एकादशे सिद्धिलक्ष्मीर्द्वादशे ललितात्मिका। एतत् स्तोत्रं पठन्तस्त्वां स्तुवन्ति भुवि मानवाः सर्वोपद्रवमुक्तास्ते
नात्र कार्या विचारणा एकमासं द्विमासं वा त्रिमासं च चतुर्मुखं पंचमासं च षण्मासं त्रिकालं यः पठेन्नरः ब्राह्मणः क्लेशतो दुःख दरिद्राभयपीडिताः जन्मान्तरसहस्रेषु मुच्यन्ते सर्वक्लेशतः अलक्ष्मीर्लभते लक्ष्मीम् अपुत्रपुत्रमुत्तमं धन्यं यशस्यमायुष्यं वहनि चौरभयेषु च शाकिनीभूतवेताल सर्वव्याधिनिपातके राजद्वारे महाघोरे संग्रामे रिपुसंकटे सभास्थाने श्मशाने च कारागे हारिबन्धने अशेष भय संप्राप्तौ सिद्धिलक्ष्मीं जपेन्नरः ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारणं स्तुवन्ति ब्राह्मणा नित्यं दारिद्र्यं न च वर्धते या श्रीः पद्मवने कदम्बशिखरे राजगृहे कुञ्जरे श्वेते चाश्वयुते वृषे च युगले यज्ञे च योपस्थिते शंखे देवकुले नरेन्द्रभवनी गंगातटे गोकुले या श्रीस्तिष्ठतु सर्वदा मम गृहे भूयात् सदा निश्चला ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखां त्रिनेत्रां च त्रिशूलां च पद्मचक्रगदाधरां पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषितां तेजः पुञ्जधरां श्रेष्ठां ध्यायेद् बालकुमारिकाम् ओंकारलक्ष्मीरूपेण विष्णोर्हृदयमव्ययं विष्णुमानन्दमध्यस्थं ह्रीङ्कारबीजरूपिणीं ॐ क्लीं अमृतानन्दभद्रीं सद्य आनन्ददायिनीं ॐ श्रीं दैत्यभक्षरदां शक्तिमालिनी शत्रुमर्दिनी तेजः प्रकाशिनी देवी वरदा शुभकारिणी ब्राह्मी च वैष्णवीं भद्रां कालिका रक्तशाम्भवीं आकार ब्रह्मरूपेण ओंकारं विष्णुमव्ययं सिद्धिलक्ष्मी परालक्ष्मी लक्ष्यलक्ष्मी नमोस्तुते सूर्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभं तन्मध्ये निकरे सूक्ष्मं ब्रह्मरूपं व्यवस्थितं ओंकार परमानन्दं क्रियते सुखसम्पदा सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके प्रथमे त्र्यम्बका गौरी द्वितीये वैष्णवी तथा तृतीये कमला प्रोक्ता चतुर्थे सुरसुन्दरी पंचमे विष्णुपत्नी च षष्ठे च वैष्णवी तथा सप्तमे च वरारोहा अष्टमे वरदायिनी नवमे खड्गत्रिशूला दशमे देवदेवता एकादशे सिद्धिलक्ष्मीर्द्वादशे ललितात्मिका एतत् स्तोत्रं पठन्तस्त्वां स्तुवन्ति भुवि मानवाः सर्वोपद्रवमुक्तास्ते नात्र कार्या विचारणा एकमासं द्विमासं वा त्रिमासं च चतुर्मुखं पंचमासं च षण्मासं त्रिकालं यः पठेन्नरः ब्राह्मणः क्लेशतो दुःख दरिद्राभयपीडिताः जन्मान्तरसहस्रेषु मुच्यन्ते सर्वक्लेशतः अलक्ष्मीर्लभते लक्ष्मीम् अपुत्रपुत्रमुत्तमं धन्यं यशस्यमायुष्यं वहनि चौरभयेषु च शाकिनीभूतवेताल सर्वव्याधिनिपातके राजद्वारे महाघोरे संग्रामे रिपुसंकटे सभास्थाने श्मशाने च कारागे हारिबन्धने अशेष भय संप्राप्तौ सिद्धिलक्ष्मीं जपेन्नरः ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारणं स्तुवन्ति ब्राह्मणा नित्यं दारिद्र्यं न च वर्धते
या श्रीः पद्मवने कदम्बशिखरे राजगृहे कुञ्जरे श्वेते चाश्वयुते वृषे च युगले यज्ञे च योपस्थिते शङ्खे देवकुले नरेन्द्रभवनि गङ्गातटे गोकुले या श्रीस्तिष्ठतु सर्वदा मम गृहे भूयात् सदा निश्चला।